Hello and welcome at Exam Zone 24/7. Today, our topic of discussion is deposit accounts. It will include all types of deposit accounts, which will include NRE accounts or other domestic accounts. And this topic is really very important for your exam. Let us begin our discussion. Okay, the discussion session is as. Hope you know about saving accounts. What are the saving accounts and how they go? Saving accounts, there are general purpose is to purpose of opening savings. What are the savings? There are limitations on total number of transactions. It depends on bank to bank. Means a bank may specify how many free transactions you may do with your saving account. The current account purpose is generally business rate purposes. There are no limitations. But the property of saving account is that there is interest is paid. The periodicity and other we will discuss later. For the current account, there are no limit on number of transactions. Okay. You can do unlimited debit and credit. Unlimited means as per your line of business, your turnover, number of transactions may be anything. It may go as high 1,000, 200,000 or anything. The bank won't stop you. Okay. Further, here is no interest is paid. Okay. No interest is paid. See, the term deposit accounts are the accounts in which these are deposited for a fixed tenure. Okay. Generally, a rate of interest may be fixed. Okay. Or linked to any benchmark rate. Okay. See, this may be in form of recurring deposit or cash certificates or others. There are a number of term deposit accounts. However, the method to pay the interest, how the interest will be paid, the interest will be paid as per contracted rate. As per contracted rate. Contracted rate means at the time of opening what the bank has contracted with you. If bank has contracted with you variable interest rate means floating interest rate, your maturity may differ from whatever is being shown. But see, now one more thing, see, saving account and term deposit account, these can be opened for minors. However, this current account that is purpose of business cannot be opened by minors. Okay. माइनर्स के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माइनर अगर ट्रांजेक्शन करेगा तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेगा माइनर की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी. बट अदर्स व्हिच आर मेजर एंड इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजेक्शन दे विल बी हैविंग द लायबिलिटी.
Okay, minor do not have any liability in a financial or non-financial transaction. However, he binds all others, whatever and whoever is involved in that transaction. Okay, NRIs may open any type of account. NRIs may open any type of account like saving, current, and term deposit. Okay, category of persons, whatever the category of persons are: NRIs, non-resident Indians; PIOs, person of Indian origins; and others means outsiders. NRI is a citizen of India, means वो इंडिया का है and living outside for more than 182 days, okay, in previous financial year. Okay, चलो, more than 182 days means आप वो बोल सकते हो 183 days or more. If the question is asked in the exam who is NRI and it is quoting that it is 183 days or more, then it is also correct, and more than 182 days are also correct. If it is 182, then no, he is not an NRI. Further, this does not include whoever is going outside for such a purpose that they may stay for an indefinite period. If they are going to stay for indefinite period, they will, by that time they are leaving India, they will be NRI. Okay. Joint account, yes, they may open joint accounts. Okay. But there are a number of types of account. We will discuss in upcoming slide about how they will be opening the accounts and what are the joint accounts. Further, the interest payment is very critical and crucial issue, which has been asked in a number of times during the exam, and many of candidates were not able to mark it correctly. We will be discussing the same onwards. See, for the saving account, interest is calculated. Interest is paid on either quarterly or lesser, means either you pay quarterly or less than that, या क्वार्टर से पहले भी आप पेमेंट कर सकते हो. यू मे पे बिफोर द क्वार्टर एंड्स. ओके, कैलकुलेशन, हाँ, दिस इज फॉर सेविंग अकाउंट. फॉर current account, no interest is paid. For term deposit account, as per contracted rate, जैसा भी contracted rate होता है उस तरह से ये पेमेंट करते हैं. ओके, even in term deposit account, interest is not paid upfront. Interest is accumulated and paid at the last, means on maturity with interest and principal. Now, how the calculation is goes? Calculation of interest is always on daily basis for saving accounts. We have today discussed in while discussing the SBI, and credit of interest is quarter. Suppose for one day you were having 1 lakh, for next day you were having 50,000, for another day you are having 1.5 lakhs. Then interest for one day on 1 lakh, interest for 50k on next day, interest for 1.5k, 5 lakhs for another day will be calculated on that day for total balance on that day. Then it will be added and it will be credited to you on quarterly basis. How?
Now, interest is rounded off to nearest rupee. But this is not the case in FCNR deposits. In FCNR deposits, calculation is done based on the actual amount, actual interest amount rounded off to two decimal places. Means in FCNR account, you will calculate the actual interest rate. Suppose it comes out to be 15.354 then you will round off it as 15.35 in which the currency it is being mentioned, because FCNR is maintained in foreign currency. The next part we will be discussing deposit accounts of NRIs and PIOs. I have already discussed who are NRI and PIO. Later we will discuss. We have already discussed NRI. NRI is a citizen of India who is living outside. PIO, who is not a citizen of India but any one of his bloodlines, especially mother, father, or grandmother or grandfather, any one or both were Indians. Then offsprings from this will contribute to origin of person of origin of means classification of PIOs. Now we will be discussing non-resident NRO and NRE accounts. See what are NRO and NRE accounts? See, first we will discuss NRO account. No, first we need to discuss NRE account. Okay. Suppose a person is outside India, then he may open an NRE account, in which this account is maintained in Indian currency. Means here is a person, Mr. A, who is an NRI. The person has an option to open NRE account, NRO account, Fcnr account. He is an NRI. What are the benefits and details we will discussing? NRE account is maintained in Indian currency, means he will send the foreign currency like USD and others. This will be converted into at a rate applicable on that day to INR. Then if he says he want to open saving account, this amount will be credited to saving account. If he wants to open NRO account, means saving current account, then it will be credited to current account. If he want to make term deposit, then he may open a term deposit account. See, the very big flaw and confusion is that people think that FCNR is the only term deposit account. No, NRE account is not a saving account. What do you think? NRE account can be saving account, current account, or term deposit account as per need of this NRI. Okay. FCNR account is a foreign currency account, means this account is maintained in foreign currency and it is maintained as term deposit account. Okay. FCNR is a term deposit in foreign currency. However, if the this person wants some trade related purpose or other purpose, whatever it is happening,
he wants to do trade and others, he may go in other way to open that foreign currency accounts. But in this case, this is not the scenario where it will go. You need to understand. See, NRE account is maintained in Indian currency and allows deposits in Indian rupees, with withdrawals also being in Indian currency. The interest earned on this account is tax free in India, means Indian tax law is not applicable to this, no tax is deducted. It can be saving, current, recurring deposit or fixed deposit. Recurring deposit, suppose he sends monthly $10,000 and you may convert and make in. Okay. See, in NRE account, it can be held jointly with other NRI or PIOs or with a resident on a farmer or survivor basis. Farmer or survivor basis. Power of attorney may be given to operate the account, but it is not allowed to open the accounts. Means NRI account open करने के लिए आप power of attorney नहीं ले सकते. किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकते कि आप मेरे जगह से, मेरे ऑन बिहाफ ऑफ मी यू ओपन द NRE account. Transfer from NRE FCNR accounts, yes, if it is there is one NRE account and he wants to open some another NRE account and want funds to transfer in that NRE account, that is possible. For investment in India, it is also possible. If it is repatriation, means whatever he has deposited, he can take back to USA, China, wherever he is living. Okay. See, in terms of repatriation, both principal and interest are freely repatriable. If he has sent $400 and rate is $4,000, okay, and we put rate as 80, that will be 3,22,000 INR. Okay, 3,20,000 INR. This amount, if he wants to get back, he may convert into USD and take it back to country where he is residing. This is called the repatriation. Repatriation means taking the funds back to the origin. Now we will be discussing Fcnr B, foreign currency non-resident bank account. This is a term deposit account in foreign currency. Okay, what is the main thing? It is in foreign currency. See, this account is maintained in foreign currency and deposits are accepted in any foreign currency. Means here is a person, Mr. A, who is an NRI. If the person want term deposit account, then he is having option of FCNRB. The tenure will be, minimum tenure is 1 year, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5 years. Okay. Maximum tenure is 5 years. This person cannot maintain or renew. ना तो इसको बना सकता है, रख सकता है, और न ही इसको रिन्यू कर सकता है बियॉन्ड 5 years. मीन्स 1 FCNR डिपॉजिट जो है उसका लाइफ लाइन है ओनली 5 years. हालांकि 5 years में वो किसी भी ब्रैकेट में अकाउंट ओपन कर सकता है. पावर ऑफ अटॉर्नी इज परमिटेड फॉर अकाउंट ऑपरेशंस बाय अनदर इंडिविजुअल. परमिटेड ट्रांसफर, लोकल पेमेंट्स कर सकता है, आउटवर्ड रेमिटेंस कर सकता है, NRE FCNR में अदर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है या इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है. बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर फ्री रिपेट्रिएबल एंड नॉन टैक्सेबल. ओके. हाउएवर NRO अकाउंट इज दैट. सी, अभी तक हमने दो अकाउंट पढ़े हैं. एक पढ़ा है NRE अकाउंट जो कि
सेविंग, करेंट सब कुछ हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा है FCNR बी। FCNR बैंक अकाउंट क्या होता है, पहले इसका नाम था FCNR ए, ठीक है, अभी बी हो गया है, ये जान लेना। देन if it is FCNRB, then there is only term deposit account. Okay, there is only term deposit account. Now in NRE and FCNR जितना भी पैसा आया है including principal and interest जितना भी है, that all may go in one time, but in case of NRO it is not possible. Further, in NRE and FCNR funds can be remitted only from outside. Outside India मतलब फॉरेन करेंसी अमाउंट्स आर परमिटेड, बट इन एनआरओ अकाउंट, सपोज यहाँ पर कोई एनआरआई है, उसका यहाँ पर कोई घर है जिसको उसने रेंट पे दे रखा है, देयर इज हाउस रेंट कमिंग, देन ही नीड टू ओपन एन एनआरओ अकाउंट एंड लोकल रेमिटेंसेस आर अलाउड इन एनआरओ अकाउंट, बट द लोकल रेमिटेंसेस आर नॉट अलाउड इन एनआरई अकाउंट। अब रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी मीन्स, इसके आगे रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है, वेन एवर जो भी एनआरआई है वो रिटर्न होके जब इंडिया में आता है, तो देखो ये जो भी अकाउंट है एनआरई, FCNR, ठीक है, एनआरओ, ये एनआरआई, PIO, अदर्स के लिए हैं, लेकिन जब वो इंडिया में वापस आ गया तो देन ही बिकेम इंडियन, नॉट एन एनआरआई, तो उसका जो भी अकाउंट है उसको RFC में चेंज कर देता है बैंक, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ओके, अब आते हैं रेजिडेंट फॉरेन करेंसी। अगर आपको मान लो आपके ब्रदर रह रहे हैं USA में और उन्होंने आपको $5,000 भेज दिए हैं, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास तो फॉरेन करेंसी का कुछ है नहीं, तो अब आप अकाउंट खोल सकते हो RFC डोमेस्टिक अकाउंट, मतलब इंडिया में रहने वाले अगर कहीं से फंड पाते हैं, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग एनी फंड, देन दे मे ओपन RFC डी अकाउंट्स। ओके, सी पेंशन, सुपरएनुएशन, अदर मनी बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम एन ओवरसीज एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर है वो अगर कोई पैसा एनआरआई को देता है इंडिया लौटने के बाद तो वो RFC में जमा होगा। लेकिन अगर वो कभी एनआरआई था ही नहीं लेकिन उसको पैसा मिल गया, वो 6 दिन के लिए USA गया था, उसको कहीं से पैसा मिला, ठीक है, तो वो RFC अकाउंट ही ओपन करके RFC डी अकाउंट ओपन कर सकता है और उसमें वो अपने फंड जमा कर सकता है। ये जो भी फंड हैं, ऑल दीज आर मेंटेन्ड इन इंडियन करेंसी INR, मीन्स दैट विल बी कन्वर्टेड एट द रेट प्रिवेलिंग रेट। ओके, RFC डी अकाउंट, यस, पेमेंट रिसीव्ड ऑन ए विजिट, ऑनरेरियम, कुछ भी आपने पेपर पब्लिश कराया उसका गिफ्ट है, उसका ऑनरेरियम है। अनस्पेंट फॉरेन करेंसी, पहले आप कहीं जा रहे थे, कुछ US डॉलर यहाँ से परचेज किया लेकिन वो US डॉलर खत्म नहीं हुए, तो आप वो पैसा उसमें RFCD में डाल सकते हो। दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू ADR GDR, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया डेट के थ्रू, डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू, उसका अगर कोई पैसा आ रहा है देन इट में बी कम थ्रू RFCD अकाउंट्स। ओके, now, conversion to rupees. The total accruals in RFCD account during a calendar month must be converted into INR before the last day of next calendar month. ये सेम चीज EFC में भी है। अगर आपको आज पैसा रिसीव हुआ है, सपोज आज आज डेट है, संडे है आज, 6/7/2025, देन नेक्स्ट मंथ आएगा अगस्त, अगस्त का लास्ट डेट कितना होगा, 31st। ओके, तो अगस्त के लास्ट डेट को तक इसको आप INR में कन्वर्ट कर देना है। यूजुअली क्या होता है, जैसे ही आता है आप उसको INR में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको मान लो उसी में कहीं फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी है, आपकी पेमेंट करना है, देन में यूज दिस, बट दिस केस आल्सो यू नीड टू go through these guidelines. Okay, now
डायमंड डॉलर अकाउंट, ये दिस इज लाइक अ करंट अकाउंट फॉरेन करेंसी। आप इसको सिमिलर मान सकते हो EEFC अकाउंट से। ओके, हु कैन ओपन, ठीक है। ये डायमंड, रफ एंड पॉलिश डायमंड को एक्सपोर्ट करने वाले के लिए जो भी लोग हैं वो ये फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोल सकते हैं। कितने, एक एक्सपोर्टर कितने DDA खोल सकता है? DDA अकाउंट मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट्स एंड एक्सपोर्टर में ओपन इन डिफरेंट करेंसी। मतलब ये मैक्सिमम 5 करेंसीज में DDA ओपन कर सकता है, वो करेंसी इसके चॉइस की होगी। एज पर एप्लीकेबल वेदर दीज करेंसीज आर directly opening account in this currency are permitted or not permitted as per their board's policy or RBI's policy. Okay, अब आते हैं SNRR अकाउंट। चलो, USA में कोई बंदा है, हियर इज ए पर्सन इन USA सिटीजन है ये, ठीक है। बट अभी एलन मस्क है, चलो एलन मस्क को बना दो, एलन मस्क है ये। एलन मस्क अभी यहाँ पे टेस्ला लेके आए हैं या सेटअप कर रहे हैं स्टार लिंक का, लेकिन इनको क्या है, एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ इनको पैसा खर्च करना है। इसलिए ये पर्सन एस स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, ये इंडिया का बंदा, फॉरेन का बंदा इंडिया में ओपन कर सकता है विद एन AD फॉर इट्स नीड्स फॉर द बिजनेस। ओके, फर्दर इसमें प्रिकॉशंस क्या रखने हैं कि इसका लाइन ऑफ बिजनेस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और सी इवन दिस में सेपरेट रजिस्टर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। या मान लो उसको टेस्ला सेटअप करने के लिए एक अकाउंट चाहिए, स्टारलिंक के लिए एक अकाउंट चाहिए, तो एलन मस्क क्या करते हैं, 2 SNR खोल सकते हैं और दोनों को अलग अलग बता सकते हैं। या एलन मस्क एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं SNRR, जिसके थ्रू वो टेस्ला और स्टारलिंक दोनों का काम करेंगे। ओके, तो ये होता है SNRR अकाउंट। SNRR account. Now we will be discussing, we have already discussed this account and SNRR account. Now we will be discussing the interest on these accounts. Okay, how the interest is paid and interest payments and calculations. For NRE accounts, there is no specific guideline, just as domestic deposits means of same amount and tenure means category. In NRE and NRO account, just domestic deposits of same category must not be differentiated in any aspects while paying for payment of interest.
if amount is greater than 1 crore, then bank may apply condition not giving premature withdrawal facility. Okay, see, होप दिस फाइंड्स यू वेल सम नोटिस डिपॉजिट एक टर्म आया था, पूछा गया था। नोटिस डिपॉजिट मीन्स ऐसे सभी डिपॉजिट जिनको कम से कम 1 बैंकिंग डे का आप नोटिस दे दो बैंक को और फिर उसको विड्रॉ कर लो। दिस इज कॉल्ड द नोटिस डिपॉजिट्स। होप दिस सेक्शन finds you well and